everyone, welcome back to Boundless Learning. In this video, I'll be starting with the topic of cell organelles. So from the videos from today onwards, I'll be discussing each and every cell organelle in a single video. For example, we know that there are different types of cell organelles in a cell, starting with endoplasmic reticulum. Then we go on to Golgi, apparatus, so on and so forth. So whatever these cell organelles are, I'll be dealing with them one by one in a separate videos. Also, I'll be posting shorts about each and every cell organelle, so it's easier for you to understand and comprehend. So without further delay, let's get started with the video. Now, starting with the introduction of this topic, we can say that these cell organelles are only and only present in eukaryotic cells. हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब हमने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस डिस्कस किया था, we said that eukaryotic cells are the ones which have a well-defined nucleus with a well-defined nuclear membrane along with membrane bound cell organelles. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि यूकैरियोटिक सेल्स में जो ये सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनल्स होते क्या हैं? सो लेट्स डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली आर सेल ऑर्गेनल्स. सेल ऑर्गेनल्स ऐसे एंटिटीज, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं विच आर प्रेजेंट इन लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स सेल. अभी लार्जर और मोर कॉम्प्लेक्स सेल्स कौन से सेल्स हैं? दीज आर नथिंग बट यूकैरियोटिक सेल्स. अब ये सेल ऑर्गेनल्स केवल उन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं जिनको मल्टीपल केमिकल एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट होती है टू मेंटेन देयर स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन. ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, इनका फंक्शन क्या है? देयर फंक्शन इज टू परफॉर्म वेरियस लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस. फॉर एग्जांपल, एक सेल को सर्वाइव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है, वो सारी एक्टिविटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी है? इन सेल ऑर्गेनल्स के. और वो एक्टिविटीज कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, मेकिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड एटसेट्रा. अब कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि दोनों ही प्लांट और एनिमल सेल्स में मिलते हैं, बट सम सेल ऑर्गेनल्स लाइक प्लास्टिड्स, दे आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स. तो हम प्लांट और एनिमल सेल्स को इस बेसिस पर भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि उनमें कुछ सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ सेल ऑर्गेनल्स आर completely absent in them. क्योंकि प्लास्टिड्स का जो फंक्शन है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय एनिमल सेल्स. प्लास्टिड्स का मेनली फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना, एंड फोटोसिंथेसिस का फंक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड बाय एनिमल सेल्स. सो दिस सेल ऑर्गेनल इज completely absent. Another additional point is कि जो हमारे सेल्स के फंक्शन होते हैं, डिफरेंट सेल्स का डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट फंक्शन होता है. तो जो डिफरेंट फंक्शन है वो किस बेसिस पर है? डिफरेंट फंक्शंस आर एट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स ड्यू टू द डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर एंड ड्यू टू द डिफरेंस इन द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द सेल्स. So I hope this was clear to you. Moving on, there are different types of cell organelles present in a typical eukaryotic cell. Some of the cell organelles are mentioned here, starting with endoplasmic reticulum. इसको हम abbreviation में ER भी बोलते हैं. Next is Golgi apparatus. Third one is lysosomes. Fourth is mitochondria. Fifth is plastids, जो हमने अभी डिस्कस किया. It is only present in plant cells. Next comes vacuoles and lastly ribosomes. अब ये जो ribosomes cell organelles हैं, they are not present in your NCERT textbook. ऐसे separate कोई topic नहीं है ribosomes का, but it is very important to discuss what ribosomes are in order to understand what is ER and how proteins are synthesized. Proteins की मैन्युफैक्चर कैसे होती है ये समझने के लिए, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या मेन फंक्शन होता है उसको समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट राइबोसोम्स आर. राइबोसोम्स का एक और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ये है दैट राइबोसोम्स आर द ओनली सेल ऑर्गेनल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. हमें ये पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता, but ribosome is an exception because ribosome
are present in prokaryotic cells as well. So this was it for today's video. This was just a little introduction about what exactly cell organelles are. In the next video, I'll be starting with each and every cell organelle in detail. We'll discuss their structure as well as their function, starting with the endoplasmic reticulum and ending at ribosomes. So I hope this was clear to you. If you like if you like what I'm teaching, kindly like the video, share it with your friends, and keep learning. Thank you.